Okay, let's get started. So, using the chain rule with trigonometric functions, this is the end of the previous lecture. Now, combining the chain rule with product rule. So the question is, h of x equals to 2x plus 1 whole power 5 into 3x minus 2 power 7. So this is we have to apply separately product rule. So this will be h derivative of x, and which will be equals to derivative of first d upon dx, and the first value, which is 2x plus 1 whole power 5 into second as it is, so 3x minus 2 whole power 7. Okay, then plus second derivative, so d upon dx into the derivative, that is 3x minus 2 power 7 into first as it is 2x plus 1 whole power 5. Okay, so this will be h derivative of x will be equals to, this will be 5. First we apply the chain rule, power rule, so 5 into 2x plus 1, then 5 minus 1, this will be 4, and then I have to apply derivative on this function, that is 2x plus 1. The derivative of 2x plus 1 will be equals to 2, then this will be 3x minus 2 whole power 7 plus this one will be 7, then 3x minus 2, 7 minus 1, this will be 6, and then it will be 3, then I have to, it will be 2x plus 1 whole power 5. Okay, so after this, I have to simplify. So 5 times it will be 10. 5 times 2 is 10. 2x plus 1 whole power 4 with 3x minus 2 whole power 7 plus 7 times 3 is 7 3s are 21. So it will be 3x minus 2 whole power 6 with 2x plus 1 whole power 5. Okay, so after this, it will be, I have to take some common. So how to take a common? So how there is there any factors or something? So this is the step simplify. So after that, we have to make a factor. To make a factor, this will be written as there is 3x minus 2 whole power 7, and this is 2x plus 1 whole power 4. So I will take the simplest one, that is 2x plus 1 power 4 and 3x minus 2 power, this one, this is the smallest one, so it will be 6. तो दोनों में हमने छोटी पावर लेनी है. छोटी पावर इसलिए कि उसमें फिर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देन अब ब्रैकेट, तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा? 10 बचेगा. 2x plus 1 की पावर 4 मैंने कॉमन ले लिया, और क्या बचेगा? 3x minus 2. सो इट विल बी 10 into 3x minus 2. Then there will be a plus 21, and यहाँ देखें 6 मैंने ले लिया कॉमन, and 2x plus 4, so it will be 2x plus 1 and bracket close.
Is it clear? So this is the first thing to do. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है. सो जो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास अटैन हुआ है दिस वन, सो इट विल बी 2x plus 1 whole power 4 with 3x minus 2 whole power 6. Then I have to take it common, so 10 multiplied by 3x, so it will be 30x. 10 multiplied by 2 will be minus 20 plus 42x plus 21. So this will be 2x plus 1 whole power is 4 and 3x minus 2 whole power 6. So it will be 30x plus 42. So it will be 72x plus 1. So this is the required answer, and this is the required derivative of this function h of x. Okay, let's move towards the next thing, that chain rule for the composite functions. So as we know that this function will be written as what? So as k of x equals to, पहले मेरे पास क्या था, h of x था, जो कि क्या था f g of x, यानी कि दो मेरे पास फंक्शंस थे, यानी कि इसमें f of x था और जो फंक्शन था f g of x, ताकि यानी कि g of x तो मेरे पास, यानी कि दो फंक्शन f of x और g of x. लेकिन मेरे पास अब तीन फंक्शन इसके अंदर आ गए. वो कैसे? अब इसको ले रहा हूँ k of x equals to h f of g of x. So it must have h of x. Okay, h of x equals to क्या हो जाएगा, h f of g of x. सेकेंड मेरे पास होगा f of x. So f of x मेरे पास ये होगा, that is f of g of x here. And thirdly मेरे पास g of x होगा, जो जहाँ पे g of x की फंक्शन की वैल्यू होगी. अब इसका डेरिवेटिव हमें कैसे लेना है? दिस डेरिवेटिव विल बी, सबसे पहले मैंने डेरिवेटिव लेना है h of h का. So h derivative will be h derivative with f of g of x. Okay, then derivating this one, f of this f derivative of g of x, and then derivative of this one, that is g f of x. अगेन जैसे मैंने आपको एलेबोरेट करके बताया था, दिस विल बी लाइक कि मेरे पास h of x क्या है, h f g of x. तो सबसे पहले डेरिवेटिव किसका आएगा, इस फंक्शन का आएगा, दैट इज h डेरिवेटिव ऑफ f of x. सेकंड इज f of x, ये वाला f of x क्या है, f of g of x. सो सेकंड विल डेरिवेटिव ऑफ f of g of x, and then g of x function that will be the derivative of x. So this is the way that तीन मेरे पास अगर वेरिएबल्स आते हैं तो मैं अपना कंपोजिट रूल बेसिकली फॉर थ्री फंक्शंस के लिए ऐसे अप्लाई करता हूँ. ठीक हो गया. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, द एग्जांपल्स. लेट अस से मेरे पास k of x है cos power 4 with 7x square plus 1. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले ये करेंगे, k of x will be equals to what. जैसे मैंने स्क्वायर का बताया था, अगर वो स्क्वायर है तो होल के साथ था. लेट अस से पहले मैंने बताया था अगर वो था cos square x, तो ये क्या था, cos x का होल स्क्वायर. लेकिन इस केस में क्या है मेरे पास, इस केस में मेरे पास है k of x जो है वो है cos power 4 and function value is
7x square plus 1. So it will be equals to whole root cos 7x square plus 1 then a whole power of 4. ओके सो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले मैं चैन रूल अप्लाई करूंगा। तो चैन रूल कैसे आएगा, पहले इसकी पावर नीचे आ जाएगी, दैट विल बी 4 देन cos 7x square plus 1 देन 4 minus 1 will be 3 दिस वन। फिर उसके बाद डेरिवेटिव आ जाएगा फंक्शन का, दैट इज दिस वन, डी डेरिवेटिव ऑफ कंप्लीट फंक्शन दैट इज cos 7x square plus 1। इसके बाद हमने 4 cos 7x square plus 1। ओके अब इसका क्या आ जाएगा, इसका होल क्यूब रूट आ गया, यानी क्यूब आ गया सॉरी, एंड डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ दिस वन, डेरिवेटिव विल बी minus sine of the function that is 7x square plus 1 and then the derivative of also this function because the x का function है, so it will be d upon dx of 7x square plus 1, so it will be written as 4 cos 7x square plus 1 with a cube root with a negative of sine 7x square plus 1 and then there is a 7x square, so the derivative of 7x square equals to 14x and it will be equals to 14x into 4, so and there also is a negative sign, so we will go to minus 56x with the साइन की जो वैल्यू होगी मेरे पास उसके साथ मेरे पास जो फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन विल बी 7x square plus 1 and with this value that is cos, अब क्यूब है तो cos क्यूब इसके साथ आ जाएगा because both are equal, 7x square plus 1. This is the required answer. Okay. Using the chain rule in the velocity program, in the velocity problem, let us say मेरे पास कोई पोजीशन वेक्टर है जिसकी जो बेसिकली विद टाइम चेंज हो रहा है, st equals to sin 2t plus cos 2t and we have to find the interval at pi upon 6। तो सबसे पहले वेलोसिटी का पैरामीटर फाइंड करना है, इसी तरह इसको मैंने डेरिवेट कर देना है, डेरिवेट करूंगा तो साइन 2t क्या हो जाएगा cos 2t और 2t का जब मैं डेरिवेट करूंगा तो इट विल बी 2, so it will be this time and cos of function equals to minus sign with the sin t, so it will be 3 sin 3t। अब हमने क्या करना है, इस वेलोसिटी के पैरामीटर में मैंने t की जगह पाई अपॉन 6 डालना है, दैट इज 60 डिग्री, so t equals to pi upon 60, so by applying t equals to pi upon 60 मैं इस तरह अप्लाई करूंगा 2 cos 2 multiply by pi upon 60 minus 3 sin 3 that is 3 pi upon 6. My answer will be this one equals to minus 2. Okay, now moving towards the next one. Using chain rule with functional values, let us say मेरे पास h of x है जो कि f g of x है, okay, if g of 1 equals to 4 and g derivative of 1 equals to 3 and f derivative of 4 equals to 7, find h derivative of x। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसमें उसी तरह डेरिवेटिव ऑफ h of x फाइंड करना है। मेरे पास h of x गिवन क्या है,
this will be equals to f g of x. G of x, so it will be h derivative will be f derivative of g of x फर्स्ट वैल्यू, फिर उसके बाद मैंने डेरिवेटिव किसका लेना है, जी ऑफ एक्स, और दोस्तों जी डेरिवेटिव ऑफ एक्स. So this will be here. So h derivative of x will be equals to, now f derivative, अब मैंने किसका फाइंड करना है, 1 का फाइंड करना है. This is my, so it will be h derivative of this one, that is 1. H derivative of 1 equal f derivative of g of 1, g of 1 multiply by g derivative, so it will be g derivative of 1. So अब मेरे पास अब g, अब क्या f डेरिवेटिव g of 1, g of 1 की वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू 4. तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय g डेरिवेटिव ऑफ 1 की क्या वैल्यू है, दिस वैल्यू इक्वल्स टू 3, और f डेरिवेटिव ऑफ 4 विल बी इक्वल्स टू 7. So 7 multiplied by 3, which will be equals to 21. So इस तरह मैं फाइंड करूँगा अपनी वैल्यू. तो यहाँ मेरे पास डेरिवेटिव्स की वैल्यूज आ जाएंगी कि कैसे मैं अपना एक फंक्शन में अपनी डिफरेंट वैल्यूज डाल सकता हूँ. ठीक हो गया. इसमें कोई सवाल हो तो मुझे आपने बताना है. Let's move forward. Okay, the chain rule using Leibniz notation. So Leibniz notation basically क्या है? This is notation जिसमें हम h of g of x को u के साथ रिप्लेस करते हैं. Okay, u के साथ. So it will be, जो मैंने पहले बताया था, dy upon dx क्या हो जाएगा मेरे इस केस में, it will be equals to dy upon du multiply by du upon dx. ये मेरे पास डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक हो गया. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, द क्वेश्चन इज फाइंड द डेरिवेटिव. हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है ऑफ व्हाट, y इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 3x plus 2 whole power 5. So if I am taking this value as u, अगर मैं इसको u लेता हूँ, so my u will be equals to x upon 3x plus 2. So this is my value for a given function. मेरे पास y क्या हो जाएगा, y equals to u power 5. ओके, अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले dy अपॉन dx जो है मेरे पास, वो होता है dy अपॉन du मल्टीप्लाई बाय du अपॉन dx. ओके, सो इफ इसमें पहला पार्ट कौन सा है, ये वाला dy अपॉन du, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, एंड du अपॉन dx कैसे फाइंड करेंगे. ठीक हो गया. अब देखें मेरे पास जो वैल्यू है u की, मैंने फाइंड करना है d अपॉन dx ऑफ y. सो माय y वैल्यू इज व्हाट, u पावर 5. तो y की वैल्यू कितनी है, u पावर 5. ठीक हो गया. दिस इज माय फर्स्ट वैल्यू dy अपॉन dt. तो ये मेरे पास पावर रूम से आ जाएगी 5 4 into the square. ठीक हो गया. नेक्स्ट इज माय du अपॉन dx, यानी कि u को डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. सो व्हाट इज u की वैल्यू क्या मैंने सपोज की, दिस वैल्यू इज x अपॉन 3x plus 2.
So it will be written as x upon 3x plus 2. अब ये मेरे पास किस तरह आएगा? This will be solved by using quotient rule. It will be that taking the derivative square of 3x plus 2 whole square. So this will be as it is, that is 3x plus 2. Then the derivative of first one, that will be 1. Okay, plus और माइनस बेसिकली क्वेश्चन 2 में माइनस आता है. Second denominator का derivative and numerator as it is. So numerator will be x, it is as it is, and denominator as the of this one. So d 3x plus 2, my answer will be 3. Okay, so it will be written as 3x plus 2 minus 3x divided by 3x plus 2 whole power square. This will be and this will be cancelled out. So my value will be 2 upon 3x plus 2 whole square. Okay, here मेरे पास दो values आ गई. This value is dy upon du and this is du upon dx. अब मैंने इसको compute करना है अपना formula. Okay, again मैं अपना formula लिखता हूँ. My formula is dy upon dx, which will be equals to dy upon du multiplied by du upon dx. So it will be written as dy upon du की वैल्यू मेरे पास थी 5 u4 with the du upon dx as 2 upon 3x plus 2 whole square, and this will be u power 4. What is u मैंने जो लिया था, it is x, ये अंदर वाली value, that is x upon 3x plus 4. So I will write this 5 into x upon 3x plus 2 whole power 4 with a multiple of 2 upon 3x plus 2 whole square. Okay, so अगर मैं nominators की बात करता हूँ, so this will be 5 will be multiplied with this one and this will be multiplied with this. So 5 times 2 is 10 10x4 divided by, अब this is यहाँ पे 3x plus 2 की power 4 है, this is 2, so 4 plus 6 power will be added up, so 3x plus 2 whole power 6. Okay, so this is the value of dy upon dx using Leibniz equation basically to find by using chain rule. Okay. There is another one, that is y equals to tangent of 4x square minus 3x plus 1. So how to solve it? As this is by u, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, y equals to tan u. इसी तरह dy upon dx किसके बराबर होगा? It will be equals to dy upon du multiplied by du upon dx. So what is dy upon du? अब मैंने differentiate करना है अपनी y की value. So first I have to differentiate y, so it will be d upon du. What is the value of y? Y equals to tan u. So tan of u, as the derivative of tan equals to secant square, so it will be secant square u. Now next parameter to do is my du upon dx. So what will be du upon dx? Du upon dx. So as d upon dx with the value of u is 4x square minus 3x plus 1.
So I have to differentiate one by one. So it will be 4, then 2x minus 3, that will be equal to 8x minus 3. These are the two values. These are the two values. First value is secant square x, secant square u, and second value is my 8x minus 3. Okay, so I have to elaborate, or I have to put the formula here. So it will be dy upon dx, it will be equals to secant square u 8x minus 3. इसके बाद मैंने क्या करना है कि इस u जो मैंने सपोज किया था 4x minus 3x plus 1, this one. ओके, इसकी जगह मैंने वैल्यू डालनी है. सो इट विल बी secant square u will be 4x square minus 3x plus 1. So it will be 4x square minus 3x plus 1 with the value 8x minus 3. So this is the final answer by using Leibniz notation, that is using notation of u. Okay, now derivatives of inverse function. So this inshallah I will start this in the next lecture. Okay then, Allah Hafiz from this lecture.